देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। The children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country, said Pandit Jawaharlal Nehru. With these words, I, Hanish, on behalf of my class again K, and our class teacher, Mrs. Reshma Nawaz, and our Hindi teacher, Mrs. Pratibha Joshi, wish you all a very pleasant morning. Today, we have gathered here to conduct special assembly on the auspicious occasion of Children's Day. We begin our assembly by remembering the Almighty and reciting the surah from the Holy Quran. I would like to invite Muhammad Harun to recite the surah. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Thank you, Harun. Now, let us pay tribute to our motherland, for which I would like to call upon Amar Raj Khan to guide us with the pledge. Please raise your right hand to your heart. India is my country and all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it. Rich and varied heritage, I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, classmates, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Thank you, Amar. Now, be ready for school song. School song by Abdullah Humam. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत
जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, Abdullah Humam. Now, let's hear a thought for the day from Jashwant Shankar Narayanan. Good morning, everyone. Thought of the day. The only way to reform children is to win them over with love. So long as a child is unfriendly, you can't mend his ways. By Pandit Jawaharlal Nehru, I repeat. The only way to reform children is to win them over with love. So long as a child is unfriendly, you can't mend his ways. By Pandit Jawaharlal Nehru. Thank you, everyone. Thank you, Jashwant. Friends, do you know who has come to meet us all today? Our loving Chacha Nehruji. Let us welcome him with huge round of claps. Hello, children. I am Jawaharlal Nehru. You can call me Chacha Nehru. Do you know when is my birthday? It is on 14th November. I am fond of red roses as they are my favorite flowers. Remember that children are like buds in a garden and should be carefully and lovingly nurtured, as they are the future of the nation and the citizens of tomorrow. Only through right education can a better order of society be built up. So study well, dream big, and success will be yours. Thank you, Chachaji, for your inspiring words. Now, I would like to invite Akhilesh Senthil Kumar to give a speech on this occasion of Children's Day. Respected principals, our teachers, and my dear friends, my name is Akhilesh. As we all know, we have yet us here to celebrate Children's Day. Firstly, let me tell you why we are celebrating Children's Day on November 14. In India, we celebrate Children's Day on November 14 as a tribute of Pandit Jawaharlal Nehru. Nehru, the first Prime Minister of India, was born on November 14, 1889. Thus, we remember his birth anniversary, which is as Children's Day. And the children also loved and called him Chacha Nehru. First, before I conclude, I would like to say one famous quote by Chacha Nehru. Children of the today will make the India tomorrow. I would also like to wish you all very happy Children's Day. Thank you. Thank you, Akhilesh. Now, let us now hear a speech in Hindi. On this occasion, I would like to invite Yusuf
Neville Balbale for Hindi speech. सुप्रभात, मेरा नाम है यूसुफ नेविल बलबले। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। 14 नवंबर पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी हुआ था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। उनका मानना था कि किसी भी देश के भविष्य उस देश के बच्चों पर निर्भर करता है। इसलिए वे अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मानते थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। आज भी बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते हैं। धन्यवाद। Thank you, Yusuf. It's time for some entertainment, for which I would like to invite my friend Muhammad Asmatullah to sing a song for us. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े यहाँ खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े यहाँ खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में, छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। ओ हम जैसे देखे जहाँ भी वैसा ही, जैसी नजर अपनी। सोचे आओ पंख जरा फैलाओ, रंग में दिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बोले बुनले। सापा धारे गारे गारे गमा पसा ओ बम 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 ओ बम चिक बोले, ओ बम बम बोले, ओ बम 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 बोले, मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। Thank you. Thank you, Asmatullah, for that beautiful song. Now, it's time for Saudi National Anthem by Mohammad Harshan. سارعي للمجد وأليا، مجد للخالق السماء، وارفع الخفار أهل يحمل المصدر، يدي الله يا موطني مني، ليس فالمسلمين عاش الملك للعلم والوطن. Thank you. Thank you, Harshan. Let us now conclude this assembly by singing the Indian National Anthem, for which I call upon Danvijay Chandran. जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलति तरंगा। तव शुभ नाम जागे, तव शुभ अंक समागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है
जय हे, जय 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 हे. Thank you, Tanvi. Once again, I wish you all Happy Children's Day. Thank you once again. Assembly dispersed. जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई. जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई. ये तो आशा